actually shook him. And then he raised his head and looked at the girl and he said, "Who are you?" मैं वही हूँ जिसने तुझको यहाँ अल्लाह में लगाया. And then she said, "I am that girl that asked you to do this Allah Allah." उसने कहा अब तू जा अपना काम कर दे, अब मुझे अल्लाह करने दे. And then the boy said to the girl that now you go and do your business. Just let me do Allah Allah. बहुत लोग ऐसी झूठी भी अल्लाह करते हैं ना, तो उनमें अल्लाह अंदर चला जाता है. At some occasions, some people do Allah Allah without sincerity and without truth, but even it still affects them and it goes inside them. कल प्रोग्राम है उस्ताद गुरुद्वारे में, है ना? कितने बजे? 8 बजे शाम के 8 बजे बुलाया था. अच्छा. Rashid, can you talk some more about the benefits of group zikr? सरकार ये पूछ रहे हैं कि आप कुछ और फरमा सकते हैं कि जो हल्के में बैठकर जिक्र करते हैं इसके मुतालिक, इसके फ़ायदे. इसका सुने सुनाई बहुत चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल में वो बता सकता हूँ. There are many things which are hearsay, which you have heard and we could tell you about, but what we will actually tell you about is the practical benefits. सुना तो ये भी है कि कुछ लोग जब फरिश्ते ऊपर जाते हैं, बल्कि हदीस है मुस्लिम की, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो लोग ज़बान से मेरा जिक्र करते हैं, मैं उनको फरिश्तों की महफिल में जिक्र करता हूँ, और जो लोग दिल में मेरा जिक्र करते हैं, मैं भी उनको दिल में याद करता हूँ. So firstly, we'll relate to you a tradition of the Prophet Muhammad amongst the Muslims, that it is related that God said, when people sit down in a gathering and remember me and chant my name verbally, I chant their name verbally amongst the angels. And when they sit down and remember me by their hearts, I then remember those people in my heart. लेकिन ये बात तो सुनी सुनाई है, हम देखी तो नहीं है. But this is something we've heard about. We haven't seen that. जो हमने देखा हम वो बताते हैं. But what we have seen, we'll tell you about that. जब हम जंगल में बैठा था ना, जब ये अल्लाह 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 करता था ना, तो अल्लाह अल्लाह से जिसम में गर्मी आती थी ना, तो जिसम से चींटियाँ जो ना वो बाहर निकलती थी, इसलिए बात करते थे. When I was in the jungle and I used to do Allah Allah, chant the name of God, my body used to heat up, and then with that heat I used to see small insects and ants fall off my body. तो फिर वो जो अल्लाह अल्लाह की हीट ज़बान से होती ना, तो उनके ऊपर गिरती ना, वो तड़प के मर जाते. And when I used to see these little insects falling off my body, the light which was created by the chanting and the heat used to fall upon them on the floor and they used to die. फिर वो मेरे गुनाहों के जरासीम थे. And those were actually the bacteria of my sins. इसी तरह ये होता है ना कि जो अल्लाह अल्लाह करता है ना, तो उसके गुनाहों के जरासीम नीचे गिरते हैं, वो पाक साफ होता है. And it is the case that when people say Allah Allah and chant the name, that the bacteria of their sins actually falls off their body and they become purified in this fashion. तो दूसरा ये देखा था कि जिस दिन पहले दिन मैं अल्लाह अल्लाह शुरू करी ना, तो मेरा दिल जो है ना, उसके ऊपर जगह जगह काले काले धब्बे थे. And then when I started to say Allah Allah, the first day I noticed that on my heart there were black spots. फिर जब अल्लाह अल्लाह होती थी ना दिल और ज़ुबान के साथ, फिर एक दिन देखा था वो बिल्कुल साफ होकर सूरज की तरह चमकना शुरू हो गया था. And then when I continued to do Allah Allah with verbally and with my heart, then I saw that one day my heart started to shine, and then one day it did shine like the sun. उस वक्त मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हुई थी. So at that point, my heart developed the love for God. उस वक्त जो मुझे डायरेक्शन हुई ना, इस दिल के ज़रिए हुई. And then after that, whatever direction I received from God and guidance, it was through this heart of mine. जिसका ये हमने तजर्बा भी है ना कि अल्लाह अल्लाह का फ़ायदा बहुत है. So we have experienced this, and we've seen that there are many benefits by reciting, chanting the name Allah Allah. फिर उसके बाद देखा ना, तो अंदर से अल्लाह अल्लाह की फिर आवाज़ें, ये मखलूकें, वो भी अल्लाह अल्लाह करती थी ना. And then we discovered after that from within we heard our spiritual bodies saying Allah Allah. फिर वो अल्लाह अल्लाह के नूर से ना वो ताकत पकड़ी. तो एक दिन मैं जिक्र कर रहा था, साथ वो भी जिक्र कर रहे थे. And then the light which was emanated by the Allah Allah, it became strong and powerful.
And one day I was reciting Allah Allah, and then I saw that they were reciting it also, the spiritual bodies. अब वही है, वही हमारी मखलूकें, कभी इसके पास जाती, कभी उधर कभी सब घूमती रहती। And those are my spiritual bodies. Sometimes they're with you and with you and with you, and they roam around all over the place. और उनको जाके फैज़ पहुँचाते हैं। जिस कारण they give benevolence to people and they benefit people. तो ये जो इल्म हासिल किया ना, हमने अपने कोई मज़हब की इबादत से नहीं किया, हमने अल्लाह। जिस कारण, and this knowledge that we have received, we did not receive it by the practice of our religion. We received it and attained it by the practice of Allah, by this chanting. तो फिर अब तभी हमको को ये हुआ ना कि ये जो लोग करेंगे, चलो अगर मज़हब में भी नहीं होंगे ना, ये चीज़ तो हासिल कर So लेंगे। this is why we came to the conclusion that people who do this will achieve this, even if they don't follow any religion. तो मज़हब का मकसद भी अल्लाह को पाना ना, तो ये इस तरीके से अल्लाह को पाएंगे। And the purpose of religion is to find God. The only difference is people find God through adopting this teaching and practicing this. और वो लोग जब ख़त्म हो गए, मज़हब ख़त्म हो गया। Because in the case of the former, when the people ceased to exist, the religion finished with them. लेकिन ये जिनकी अल्लाह अल्लाह मखलूकें बाहर जी निकली हैं, सर। ये तो ख़त्म नहीं होती हैं, नहीं तो क़यामत तक दुनिया में अल्लाह लक़त But करेंगे। those people that actually found this knowledge and the spiritual bodies were awakened, they never cease to exist, even until the day of judgment, the end of the world. They'll continue saying Allah Allah inside them, in this world. तो मज़हब वाला हमारा तब ख़राब हो गया ना, जी सर. कि ये मतलब है, ये मज़हब की बात क्यों नहीं करता, ये अल्लाह की बात क्यों करता। Because this is why the people of religions are opposing us, and they're in conflict with us. They say, why doesn't he talk about religions? He just talks about God. और इसके बाद के ऊपर और ये भी जो फतवा है, ये मज़हब की तरफ से हमारे ऊपर फतवा है जी सर. कि कत्ल कर दो इसको। Because these many fatwas that we have from people are for this reason, that we should be killed, because for this reason that we don't talk about religion but talk about God. Shahi, when you went into the jungle, you keep referring to we. I think my understanding is that you went, or there was a gathering of people there. Was this like a small community, or was it like a camp? How did it, if there was we, that's obviously more than one, so you know what I'm trying to say. So सारे पूछ रहे कि जब आप जंगल में गए थे तो शायद तर्जुमे से इन्होंने ये अखज़ कर लिया कि बजाय मैं के हम इस्तेमाल होता है, तो क्या आप अकेले थे कि और भी लोग आपके साथ थे जंगल में? I was alone. There was nobody else with me. स्पिरिचुअल बॉडी दूसरों की थी, मदद करती थी, ज़हर में मैं अकेले था। जिसका physically I was alone, but there were other spiritual bodies who assisted me spiritually. Could you see them? आप उनको देख सकते थे? अक्सर देखता था। Yes, often I would see them. और बातें भी करती थी। They would talk to me also. Did the Lord talk through them or through God himself? Sorry, I couldn't hear you. Did the Lord talk through them or by himself? By himself. Himself. So आप पूछ रहे हैं जब अल्लाह ने आपसे गुफ्तगू की तो इन वो जो मखलूकों के ज़रिए की, जो स्पिरिचुअल बॉडीज या बुजुर्ग आते थे कि बराह रास्त उसने की? सबसे पहले ना मखलूकों के ज़रिए पैगाम मिलते थे, जी लेकिन ऐसा होता था कि कभी पैगाम वही होता था, कभी मखलूक दूसरा कह देती थी, हमको समझ नहीं लगता था। उसमें कभी शैतानी मखलूक आ जाती, कभी रहमानी मखलूक आ जाती, वो कानों में आवाज़ें आती। Initially it was through the spiritual bodies, but what the problem with that was, I would receive messages from God from these spiritual bodies, but then sometimes it would be very confusing because the message from God was one message, but what they would actually tell me was something else, and sometimes the messages were from good, sometimes from evil. They would get confused. एक दफ़ा एक आता उसी शक्ल में कि यहाँ से चला जा, आगे चला जा, जब जा रहा होता फिर उसी शक्ल में आता, किधर जा रहा, कि तुमने जो कहा था, कहता हम तो नहीं था। जी सर.
sometimes what would happen, I would see a spiritual body, an image, and it would say to me, "Why do you have to go to this place?" And when I would embark upon that journey, I would see that same face again during the journey, and it would ask me, "Where are you going?" And I would say, "To this place," and it would say, "Why?" I said, "Because you need me to do so," and it would say, "I didn't." तो वो इस वजह से करते हैं कि मैं एक जगह बैठा था ना, जी सर। ताकि इसके काम में मदाखलत तो इसी में उलझा रहे। Yes, God. And this was happening because some spiritual bodies started to interfere with my efforts and progress, so that I would remain confused and pay my attention more to them than my objective. फिर एक दफ़ा एक संत ने कहा कि ऐसा कर तू दरिया में छलांग लगा जा। Yes, God. Then at one time a saint said to me, "Right, get up and go and jump in this river." मैं इस शक्ल पे लगाऊंगा जब मुझे यकीन होगा कि वाकई तुम सही हो, मुझे यकीन ही तुम सही हो या वो सही है। Yes, God. Then I replied that I will only do that once I'm completely satisfied that this is from the truth. Now I don't know that whether you're right or whether the other spiritual bodies are right. तो फिर थोड़ी देर में दूसरा आ गया, उसने कहा ये जो तुमको कह रहा है दरिया में छलांग लगाओ, ये तुमको मरवाने के लिए कह रहा है, वो शैतान है। Yes, God. Then I saw another spiritual body a few moments later, and it said to me that this spiritual body that said to you to jump in the river, this is only doing that to get rid of you. It's Satan. और फिर वो चला गया, फिर वो पहले वाला है कि तूने अभी छलांग नहीं लगाई, अल्लाह का हुक्म है छलांग लगा जा। Then the second spiritual body disappeared. Then the first one returned, and he said to me, "You're still here? Haven't you jumped in the water yet? It's the command of God that he jump in the river." मैंने कहा, अभी तो तुम आया, तुम कहता था नहीं लगाना, इसी शक्ल में आता था ना, Yes, तो God. कहता वो शैतान था। And then he used to come in the same image, and then it said to me that दोबारा फरमाना सवाल। उसी शक्ल में फिर वो आया। Yes, sir. हाँ, तो कहने लगा कि वो जो था ना वो शैतान था। Yes, God. It came in the image of the second spiritual person and said, "Oh, he was Satan." Meaning they would accuse each other of being Satan. There would be two different spiritual bodies, but they would come in the same image. हम सोच रहा था कि इनकी मदद के बगैर Yes, sir. चल भी नहीं सकता और इनकी शनाख्त भी नहीं हुई, क्या करें अब हम। So then I thought to myself that I can't actually proceed spiritually without their help, but at the same time I'm unable to recognize them. So what should I do? हाँ, किसकी बात माने। Yes, God. Who shall I be? तो उस वक्त फिर हमको बताया गया था, हमारे इस दिल पे आवाज़ आई थी Yes, God. At that point I was told, and I heard a voice on my heart, कि जो अल्लाह का वली होगा ना, उसकी कमर के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा। Yes, God. And then I was told that whomsoever is a friend of God, a saint, you will see written on his back, La ilaha illallah. फिर जब कोई हुक्म देता हम उसकी कमर देखते हैं ना, तो कलमा लिखा होता है, फिर हम उसका हुक्म मान Yes, लेते हैं। God. Thereafter that whomsoever would come to me and command me to do something, I would look at the back to see if it was written. If it was written, then I would listen to them. शैतान क्या कहता है, वो भी ऐसी कलमा लिख के आ जाता, लेकिन वो जो सेंट होता है ना, उसमें उभरा हुआ नसों से खुदा हुआ होता Yes, God. और उसमें वैसे लिखा होता। And then what Satan did, he would actually appear and have the kalima written on his back. But the difference was that the friends of God, the saints, the kalima that was written on their Gosh, back, gosh. it was actually in the meat and it would appear from the nervous system within the nerves. Whereas on the back of Satan's back, it would just be written on the surface of the skin. उसके बाद फिर जो पैगाम आते हैं ना, Yes, God. तो फिर वो दिल में आते, दिल में तहरीर आती, फिर इधर आते, फिर ज़ुबान से निकलते। Because thereafter the messages that I received, they would first come in the form of a script on my heart, and then they would move to the center of my chest in the spiritual body, and from there they would come out of my mouth. अगर बाज़ा हुआ शैतान की तरफ से आते तो वहीं जल्दी जल्दी आते ना, तो जल्दी जल्दी यहीं जल जाते, ख़त्म हो Because जाते। many times I would receive some messages in the form of a script from Satan on my heart. They would come in great hurry, and then they would quickly diminish and fade away. तो जो अल्लाह की तरफ से आते हैं ना, तो वो आके और तेज़ होते और चमकते, Jesus. और अल्लाह भी और तेज़ होती, पूरे जिस्म में अल्लाह शुरू हो जाती। And तो यहाँ those, से आते थे वो ज़ुबान खुद बोलती। and those messages that I received from God, I was able to tell that they would come in the form of a script on my heart, and then they would shine like the sun. And at the same time, my heartbeat used to go very fast. Allah used to go very fast all over my body. My whole body used to say Allah. Then they used to move to the center of my chest, and I was able to speak that script. जो अल्लाह की तरफ से होता है ना, वो इस तरीके से होता So है। that message that was received from God, that was from God, it came in this way. तो बाकी एंजल के जरिए भी हो सकता है। Yes, God. And the other messages can be conveyed by the angels. So when you really have Allah in the heart, you can really decipher then the truths. So
वह पूछ रहे हैं कि जब अल्लाह दिल के अंदर आ जाता है ये जिक्र, उस वक्त ये मुमकिन है कि सच और झूठ की पहचान हो जाए इस तरीके से. शुरू में नहीं होती है ना, इसका नॉट इन द बिगिनिंग. जब बिल्कुल अंदर लाइट आ जाती है ना तो फिर मतलब पहचान होती है. Because when the light completely comes inside, when it's mature and you complete it, not in the beginning though. तो बहुत से लोग हैं जिनको इसी तरह कानों में आवाज़ आती है ना, उस कहते हैं हमको अल्लाह ने आवाज़ दी, फिर गुमराह हो जाते हैं. So there are many people that similarly hear voices in their ears and they said, "Oh, God spoke to us," and then they become misguided and deceived. क्योंकि इस लाइन में चलने के लिए पहले इल्म ज़रूरी है ना, इल्म सीख के चले ना, फिर मार नहीं खाता ना. जैसा दरिया में तैरने जाने के लिए तैरना इल्म ज़रूरी है, वरना डूब जाएगा ना. Yes, to travel in this path, on this line, it is therefore important, necessary to obtain some knowledge regarding traveling on this path. Just as you go swimming in the ocean or the river, you have some knowledge about how to swim on the water. You know how to swim. Therefore, you don't drown. If you didn't have that knowledge or you couldn't swim, you would drown. Similarly, it's important to have the knowledge of this path in order to embark upon it and then travel successfully. वो इल्म सकर कैसे मिलता है? मतलब अभी तो हमको ये इल्म सिखा रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाए ना, जी सर. तो फिर जो इनको मुशाहिदा होता जाएगा हमको बताते जाएंगे, फिर हम बताएंगे ये सही है ये गलत है. जी सर. Allah is starting inside you now. We're helping you with that. Slowly but surely you'll start to have experiences. Then you will tell us about those experiences, and then we will tell you and decipher them for you and tell you whether they're good or bad. When Jesus lived and people would be possessed by demon spirits, and the name of Jesus brought these demons out of people, exorcised them. Will the name of Allah also, if someone chants Allah, will it bring these demons out of the person? सवारी पूछ रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में कुछ लोगों के अंदर जिन भूत रहते तो वो जीसस का नाम लेते तो वो चीज़ चली जाती. तो कैसे इसी तरीके से अल्लाह अल्लाह करने से जब अल्लाह का नाम अंदर चला जाए तो वो चीज़ के अंदर चीज़ चली जाएगी. क्योंकि अल्लाह में पावर ज़्यादा ना जीसस से. अगर जीसस के नाम से चली जाती है तो अल्लाह के नाम से नहीं जाएगी. जिसका that is the case when the name Allah comes inside, whatever is in the body, whatever is possessing the body will actually leave, and that is because the name of God, Allah, is the strongest name. It's very powerful. If the thing can leave the body in the name of Jesus, then why shouldn't it leave in the name of God? लेकिन सिर्फ फर्क ये था ना कि जो लोग जीसस के थे ना वो जीसस का नाम लेते थे तो चीज़ दूसरों को नहीं जाती थी. इसका the only difference is those people that were of Jesus, that belonged to Jesus, when they said Jesus, the thing would disappear. But those people that didn't believe in Jesus or didn't say Jesus, they still remained. इसी तरह जो लोग अल्लाह से कांटेक्ट हो जाएंगे ना उनकी वो चीज़ें जाएंगी, दूसरों को नहीं जाएंगी. In a similar way, those people that are connected with God and have God inside them, Allah inside them, they will be sort of dispossessed, so to speak. But the other people, they'll still be affected and subjected to those things. हाँ, बाकी लोगों के पास और जीसस के पास ही जाना पड़ेगा. So then the other people will have to go to, they'll have to find Jesus as well. You were saying that when we have the zikr, sometimes you hear people. Is that always or just sometimes? सरकार ये पूछ रहे हैं कि आपने अपने फरमाया था कि कभी जिक्र के हल्के में आप बैठते हैं, चंद ही लोग होते हैं, ज़्यादा आवाज़ें आती हैं. तो ये हर वक्त ऐसे होता है, कभी कभी होता है. Sometimes. How if it was your Yeah. first time? Sorry? How if it was your first time? And you heard that? Yeah. सरकार ये पूछ रहे हैं अगर पहली मर्तबा आप जिक्र के हल्के में बैठे और ऐसा महसूस हुआ, आवाज़ें सुनाई दी, तो उसका क्या मतलब है? अच्छी अलामत है ना. That's a good sign. ये जो शहन के घर में करते ना जी सर. आधी रात के बाद करते थे, जी सर. अब तुम्हारी वजह से उसने दिन में कर दी ना, उसकी वजह पता क्या थी पता है? This zikr that was done in Shaheen's house, Yeah. which was that- which was done after midnight. Now, for convenience and for other people's sake, it's done during the day. What was the reason behind that?
उसका मकसद ये था कि आधी रात के बाद जी सर। इस दुनिया में ना फरिश्ते आते हैं ऊपर से नीचे। The reason it was done after midnight is that after midnight, angels from above come into this world. तो फिर वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, जी, तो उनके लिए दुआ करते हैं, उनके साथ बैठते भी हैं। Yes, sir. And the angels which come after midnight roam around this world looking for such gatherings of such people who commemorate the name of God. And then they sit amongst them and pray for them. वो फिर जाके ऊपर बताते हैं ना, Those angels then go back up and tell God about this gathering. अब तुम अगर दिन में करेगी, दिन में तो वो नहीं आएगा ना। So now if you do the same gathering during the day, those angels won't actually come during the day. फिर जो दिन में यहाँ के जो दुनिया के जो है ना रूहें वगैरह वो आएंगी, वो बैठेंगी, उनकी आवाज़ आएगी ना। Yes, God. And what will happen during the day is that those souls which are actually on the earth during the day, they will actually come and sit in the gathering, and it's those voices that you will actually तो hear. ये तो ऊपर जाके नहीं बताएंगे ना। Yeah, but these souls won't actually go up and tell God. इस वजह से जो लोग आधी रात के बाद जिक्र करते हैं। Yes, God. This is why the zikr that is done after midnight is done for this purpose. तो वो लोग जब से यहाँ आधी रात के बाद ही कर रहे हैं, अब इनकी वजह से शायद उन्होंने दिन में किया। Yes, God. And I give the example of Shaheen and the gathering, that it was done for some time after midnight, and now for people's convenience and other reasons it's done during the day. लेकिन अगर आधी रात के बाद हो तो उसमें इनका भी फायदा, उनका भी फायदा। Yes, God. But if it could be done after midnight, then they would benefit and you would all benefit as well. Seems more powerful. पर कहने कि उसमें ज़्यादा ताकत लगती है. हाँ, वो वही वजह है Yes, उसमें। God. That's the reason. Yeah. Yeah. And it's dark. They can turn the lights off where it's Sure. dark, where you don't have to see things. And तो you कह रहे can कि concentrate. उस वक्त अंधेरा भी होता है, बत्ती में बुझा देते हैं और दिमाग किसी और तरफ माइल नहीं होता, ध्यान जिक्र में रहता है. Is it better for the angels to travel in the dark? Is that why? तो मैं पूछ रहा हूँ क्या फरिश्तों के लिए वो बेहतरी है कि वो अंधेरे में सफ़र करते हैं इस वजह से कि रात को आते हैं. अंधेरे की वजह से नहीं, वो तो हर वक्त आ सकते हैं। सिर्फ ये होता है ना, ये जो दिन है ना, ये तो तुम्हारे लिए, जी सर. मगरब से लेके आधी रात जो है ना, ये तो जिन्नों के लिए है ना, उनके लिए आज़ादी है ना। ये दिन में तुमको आज़ादी है, आधी रात तक वो जिन्नों को आज़ादी है। आधी रात के बाद फिर फरिश्ते आते हैं ना, जब सारे लोग अपना काम ख़त्म करते हैं, शैतान ये ख़त्म कर देते हैं, वो आते हैं। जी सर. That's not the case. The angels could travel at any time. It's just that the time allocated to the humans, the human freedom, is up till sunset. And between sunset and midnight, the freedom is then allocated to the other spiritual creatures, the jinns. And then they roam about freely. And then even they fall asleep at midnight. And after midnight, when all the satanic activity and everything else has come to a stop, that's then when the angels descend upon the earth. बस चलें आप, जी सर. पूछो उसे शीरीन से। शीरीन नाम है, Maria. चाय वाई नहीं पिलाएगी? They were saying that is that it will go now, and they also asking that aren't you going to offer us any tea? Aren't you going to offer us any tea? क्या बोलती है? So I बिल्कुल दूंगी. हाँ दे। Okay, give us a cup of tea then, please.